Yaps. It's in the name. Let's try this again. Why is South India better than North India? Sorry, we were watching other videos. Sorry, Geeky. Your back of the mind, North is superior. India is not growing evenly. We are the fourth largest economy in the world, पर हम अलग-अलग timelines पे grow कर रहे हैं. India Don't drop links in the chat. Unicorns, talent और exports. If you wanna recommend a video, put it in Discord, and I might watch it. I'm gonna say this once. It's gonna sound like a jerk, but it's just so that we can get the point across. Just because you recommend a video doesn't mean I'm gonna watch it. I understand you might want me to react to it, but there's hundreds of things to react to, and ultimately you guys want to see me react to stuff that I'm actually curious about. So if you put it in Discord, I see it and I'm curious, then that's a win-win-win. We all win. But just because you recommend something doesn't mean that I'm gonna watch it. And today we are not asking who's doing better. Also, don't do links in chat, obviously. Simple question. Why did the South move ahead, and what happened that made the North fall behind? The allegation is major that the center is pro-North and anti-South Indians. While India's South is surging, the North is lagging behind. North India is not really able to generate enough jobs. Welcome to Behind the Headlines. Because North we have Bihar? News की full story decode करते No way हैं, Bihar is आपको actually सिर्फ that वो मिले bad. जो truly matter करता है. And just to clear it out, Bihar sounds like it's the Ohio of India, I swear. ये कोई North versus South का debate या culture war नहीं है. ये 30 से 40 साल के पॉलिसी सीक्वेंसिंग का रिजल्ट है. तो चलिए नॉर्थ एंड साउथ के बीच का डिफरेंस डेटा के थ्रू समझते हैं. एनालिसिस के लिए हम साउथ से ले रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला, और नॉर्थ से हमने यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और झारखंड को लिया है. अब नॉर्थ में टूरिज्म हैवी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंटेंशनली एक्सक्लूड किए गए. तो बात करते हैं जीडीपी और पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी. साउथ इंडिया में भारत की लगभग 20% पॉपुलेशन रहती है, पर ये रीजन इंडिया के 31% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है. अप्रोक्सीमेटली 102 लाख करोड़ रुपीस. एवरेज पर कैपिटा इनकम 3.4 लाख रुपीस. अब नॉर्थ इंडिया के सिलेक्टेड स्टेट्स में करीब 50% पॉपुलेशन रहती है, पर उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 90 लाख करोड़ रुपीस, और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1.8 लाख रुपीस है. मतलब Sheesh. पर पर्सन आउटपुट साउथ में ऑलमोस्ट 2x It's like half. है. और ये सिर्फ इनकम का गैप नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का गैप है. साउथ इंडिया में एक वर्कर ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि स्किल्स, हेल्थ, अर्बन जॉब्स और फॉर्मल सेक्टर्स ज्यादा है. जितना झारखंड का जीडीपी है, उतना तो कर्नाटका सिर्फ एक्सपोर्ट करता है. I know this is gonna sound crazy, but like geographically, they're just so far away from China and Pakistan that South India doesn't have to worry about conflict like that. They have the North to kind of to give them a buffer between Pakistan and China, allowing infrastructure, and like when you're not focused on defending yourself from invaders, you can really focus on infrastructure and everything else like that. है. 5.5 लाख करोड़. South got ocean means too. True, they have access to ports and everything like that, especially Kerala. 89% के करीब है. साउथ में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश की है at 72%, इनफैक्ट द लोएस्ट इन इंडिया. और नॉर्थ में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार की at 74.3%. लेकिन फीमेल लिटरेसी गैप शार्प है. केरला में इट्स मोर देन 90%, और बिहार, राजस्थान में ये अराउंड 65% है. हाँ, पंजाब में फीमेल लिटरेसी 75 to 80% है, पर ओवरऑल देखें तो असली The women can't read? Nick Fuentes would be so happy. डिफरेंशिएटर है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. साउथ इंडियन स्टेट्स में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली ज्यादा रही है. तमिलनाडु और कर्नाटका में 25 to 30% से ज्यादा है, और वही यूपी, बिहार में ये सिर्फ 10 to 15% है. अब इसका डायरेक्ट असर हाउस होल्ड इकोनॉमी पे होता है, which is why you'll see that South India has more dual income families, higher savings, higher nutrition and education spend, और ज्यादा टैक्स बेस. नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ स्ट्रक्चरली कैप रहती है जब आपकी हाफ पॉपुलेशन इकोनॉमिकली इनएक्टिव हो जाती है. अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जो कि एक ब्रूटल बट ऑनेस्ट इंडिकेटर है. नाउ दिस शोज द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स बिफोर दे टर्न 1. केरला में ये सिर्फ 6 है, तमिलनाडु में ये 12 से 13 है, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 19, यूपी में 38 और बिहार में 47. Dude, Bihar is hitting the top score on all of these, is it not? Bahar said, hold my beer. Watch this. I'm a gamer. Let me get top score. FY25 में इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स करीब 20 लाख करोड़ तक पहुंच चुके थे. इसमें से 40% कर्नाटका अकेले से आया है. तमिलनाडु आज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है फॉर ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड हार्डवेयर. एंड व्हाई साउथ विन्स हियर इज बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को सिर्फ लैंड और लेबर नहीं चाहिए. उनको चाहिए प्रेडिक्टेबल पॉलिसिंग, फास्टर कोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, क्लियर लैंड एक्विजिशन एंड लोअर एवरीडे करप्शन. और साउथ इंडियन स्टेट इन सब चीजों में कंसिस्टेंटली ऊपर रैंक करते आ रहे हैं. नॉर्थ इंडिया में ये इंस्टीट्यूशंस अब बिल्ड हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो नॉर्थ में ज्यादा है. तो अब बात करते हैं कि ये इतना बड़ा डिफरेंस आया क्यों. रीजन 1, अर्ली ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. साउथ में 1950s to 1970s में एजुकेशन एंड हेल्थ पे पैसा लगाया, और वही
I know this is gonna be fucked up, but when the Britain invaded India and had, you know, like British settlements and whatnot, where was most of the money and the infrastructure being done? Is it South? Is it Kerala, Mumbai, all of these lower areas? Is that where it's at? नॉर्थ ने फर्टिलिटी और स्कूलिंग ट्रांजिशन काफी लेट शुरू की और एक बार वो गैप बन गया फिर वो बढ़ता ही चला गया. रीजन 2, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी. कोल, आयरन और स्टील ये Freight सब रिसोर्सेज equalization बिहार और policy. झारखंड में थे. बट 1952 में गवर्नमेंट ने कहा फैक्ट्रीज कहीं भी बने फ्रेट कॉस्ट सेम ही रहेगा और इसीलिए इंडस्ट्रीज मूव साउथ क्योंकि उनके पास पोर्ट्स थे और रिसोर्स रिच बिहार एंड झारखंड अपना नेचुरल एडवांटेज खो बैठे. 40 साल बाद जब पॉलिसी हटाई गई तब तक परमानेंट डैमेज हो चुका था. रीजन 3. Yep, all the British settlements were in the south. South India diversified into horticulture, dairy, fisheries and food processing, जबकि North India MSP backed wheat rice monoculture में ही लॉक रहा. हाँ, South के पास अपनी एक coast line थी that worked to its advantage, लेकिन that's not the only factor that stopped North. North For sure. got stuck in low productivity farming, and once you're stuck in it with 60% of your workforce, escape काफी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि capital Yeah, if more than half of your population is a bunch of farmers, it's really hard for that 40% to be able to build out the infrastructure to one give other opportunities other than just production farming, and two, it's I don't want to say a mindset or an education, but holy shit, it's like how can you build out this high level infrastructure with just the minority of people who are outwardly seeking that when there's not enough skill or labor to build the roads, the buildings, to get the electricity involved in there. French to Goya was Portuguese. I mean, all farming should be done by a state. It did well in the Soviet Unions. In Soviet Russia. I'm not saying that there shouldn't be a bunch of farmers, right? There's going to be parts of India that are going to be more, have more infrastructure versus less. And the ones that have less infrastructure, i.e. more rural areas, are going to naturally be more farmers, right? That's just naturally what's going to happen. You would just hope that the state would be able to subsidize those farmers in a way where they can live honorably. Not, you know, like you don't want. To me, I don't want to see my farmers escape काफी मुश्किल हो जाता है in tattered clothes, no clothes, looking like they haven't eaten in fucking years. You know what I mean? Like just so scrawny. Great range of motion, but I want my farmers to look healthy. You know, I want them to look like Midwest farmer boys, just good old thick boys. वर्कर्स अनस्किल्ड हैं मॉडर्न जॉब्स के लिए, इसलिए इनकम स्टैग्नेशन सिर्फ लो प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि पॉलिसी इंड्यूस्ड क्रॉप रिजिडिटी का भी रिजल्ट है. रीजन 4, डेमोग्राफी एंड आईटी टाइमिंग. साउथ ने पॉपुलेशन कंट्रोल 1970 से ही स्टार्ट कर दिया था. नॉर्थ ने उसे थोड़ा डिले किया. 1990s में जब आईटी बूम आया, साउथ वाज रेडी एंड नॉर्थ नॉट एट ऑल. और साउथ में देयर आर फ्यूअर डिपेंडेंट्स फॉर वर्कर्स बिकॉज़ वहां ज्यादा वुमेन काम करती हैं. So the South had access to the internet first. तो फिस्कल प्रेशर थोड़ा कम है. अब नॉर्थ इंडिया में वैसे ही ज्यादा बच्चे हैं और ज्यादा एल्डरली लोग भी हैं और वुमेन वर्कफोर्स का भी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है. रिजल्ट, सेम ग्रोथ रेट के बावजूद ना नॉर्थ में फिस्कल प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है. बट साउथ भी एक्सपोज्ड है बिकॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, अर्बन कंजेशन, पावर डिमांड. लेकिन नॉर्थ के पास अभी भी डेमोग्राफिक मास और लैंड है. ओनली द रिफॉर्म्स नीड टू बी फास्टर. सो नॉर्थ इंडिया इज नॉट कोलैप्सिंग, इट इज जस्ट लेट. और बदलाव अब आ रहा है. यूपी, हरियाणा, राजस्थान अब एक्सप्रेसवेज, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं. पर डेवलपमेंट ना कंपाउंडिंग की तरह होता है. जितना ज़्यादा आप लेट स्टार्ट करोगे उतना इनिशियल नंबर्स वीक लगते हैं, मोमेंटम दिखता नहीं है, पर फ्लाई व्हील जरूर बन रहा होता है. And South India is reaping the rewards for the changes it made to its system 40 years ago. बस डिफरेंस ये है कि नॉर्थ ने वो चेंजेस अभी करना स्टार्ट किया है लास्ट 5 से 6 सालों में. अभी नॉर्थ हैज टू कैच अप क्विकली सो दैट एक दिन ऐसा आए जब आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की से किसी को जबरदस्ती बेंगलुरु या चेन्नई ना जाना पड़े. They can work in Patna or Lucknow. No need of migration for survival. Isn't Chennai the Silicon Valley of India? Like Chennai, isn't that where all like the big startups, venture capitals at? Where is Chennai? Is that North India or South India? Nope. Oh. No, it's Bengaluru. Are we sure? साउथ की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है. साउथ पहले चला. Bengaluru is in the south, but where's Chennai? कंपाउंडिंग लेट स्टार्टर को कभी माफ नहीं करता जब तक रिफॉर्म सस्टेन्ड ना हो. Well, that's it for today's episode of Behind the Headlines. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Where's Chennai? I thought Chennai was North India. I thought that was also like a hub. One more thing that's missing in the North is civic sense. Yikes. As a North Indian, I can confirm that we are only focusing on religious fights. South warriors, North keyboard warriors.
Bangalore is also for the hub. It's so. Okay. Chennai is just so communist, so it is a bunch of leftists who are nerdy. It is basically like the Silicon Valley. South India is the backbone of India. Proud and lucky to be a South Indian. Bad habits of North Indians like Pan, Gutta, etc. Pleasure is more important than work commitments. Also, North Indians have arrogance, but South Indians have polite and corporate meetings in daily life. You need better English. South Korea is always deprived of its legitimate financial benefits, whereas South India contributes more, but they get less than North India gets more as they have the population and central government. Huh. Very interesting. I'm actually surprised, I'm surprised India isn't split up between North India and South India, kind of like North Korea and South Korea, because it seems like those are just so different. Like, the places are just so fucking different.